हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। ये एक ऐसा स्पेशल रिमोट कंट्रोल है जिसका बटन दबाते ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का द टेक वर्ल्ड इट जस्ट ओपन्स अप। एक ऐसा शटर खुलता है एंड शटर के पीछे होता हूं मैं एंड आई ब्रिंग ऑल द डिटेल्स, छोटी छोटी बड़ी बड़ी ऑल दीज कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे, ताकि हम सब टेक को और बेहतर समझ पाएं और ज्यादा हम टेक से प्यार भी कर पाएं। मेरे को एक चीज से प्यार है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्यार है, आई थिंक हम सभी को है, वो है खाना। और जब हम बात करते हैं खाने की, तो अब घर पे खाना बना हो अच्छे से हो, एंजॉय नॉट ऑलवेज पॉसिबल, स्पेशली वो लोग जो शायद घर से बाहर रहते हैं और यूट्यूब पे कुकिंग क्लासेस सीख सीख के देख देख के भी पूरी कोशिश करने के बावजूद ढंग का खाना नहीं बना पाते हैं। एट देयर रेस्क्यू वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। या कभी हमारा अगर रात को किसी ऑड टाइम पे रसमलाई खाने का मन कर जाए तो व्हाट वी डू, वी ओपन आवर फोन्स एंड मोबाइल फोन में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रॉम जोमैटो टू स्विगी टू, भाई मैं कितना नाम लूं, आप जानते हो द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर इन राइट नाउ। मल्टीपल एप्स, मल्टीपल चॉइसेस एंड जस्ट विद वन टैप वी गेट आवर फेवरेट फूड। So today, let's go in detail. Let's see what's cooking with these apps and ये आखिर काम कैसे करती हैं, making sure कि आपका जब जो खाने का मन हो कभी भी आपको तुरंत मिल जाए on time, बड़े आराम से। Hello friends, my name is Gaurav aka TG. You are watching Tech with TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Let's first dissect. मैं आपको बताता हूँ what all options are there. Basically, it's divided into 4 different parts. The first part is with you and me. I mean, users. जहाँ पे हम अपनी तरफ से we can order and we can place choices. Second part is with their partners, the restaurants. वो लोग जो खाना prepare करते हैं. The third part is with the delivery guys. वो लोग, वो riders जो हमारे खाने को हम तक पहुंचाते हैं. And the fourth part is with that company, that platform. उनकी application का जो पूरा back end है. Now, it might sound like a complicated process, which of course it is, but क्योंकि आप देख रहे हैं Tech with TG, I'm going to explain everything बड़े आराम से, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए ये चीजें काम कैसे करती हैं। Let's go step by step in full detail. Let's talk about a restaurant becoming a partner to a particular platform. अब यहाँ पे it comes all about optimization, because the platform needs to have a sufficient user base, at the same time needs to have a robust डिलीवरी नेटवर्क, वरना या तो ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं, और अगर ऑर्डर्स आ गए बहुत ज्यादा तो वो शायद टाइम पे डिलीवर ना हो पाए। Now what these restaurants have to do is they need to upload their full menu on the application. अब ये भी एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, but their version is a bit different, जहां पे इनका UI अलग है, the kind of options they get is a bit different. अब जब ये सब कुछ अपना सेटअप कर लेते हैं, they have all their menu items listed, they need to also figure out a time for the delivery. अब उनको पता होना चाहिए कि इफ समवन आस्क्स फॉर गुलाब जामुन तो उसको रेडी होने में टाइम कितना लगेगा, या मे बी इट्स अ रेडी आइटम, दे जस्ट नीड टू पैक इट अप, एंड उसके बेसिस पे आपको जो टाइम है वो शो किया जाता है। उसके बाद में इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट दे नीड टू अपडेट टाइम बाय टाइम, बिकॉज अगर let's say they promised a delivery of 20 minutes for some particular item और वो रेडी होने में ही आधा घंटा लग रहा है, आपके पास पहुंचेगा वो और आधे घंटे बाद, let's say you would give a 1 star rating for sure, because आपका गुलाब जामुन आपको ठंडा मिला है। अब इस केस में the ratings would go down. If the ratings go down, that particular restaurant would not be recommended as much or maybe on the top in that application. तो at the end उनका नुकसान होने वाला है। तो this optimization has to be there. At the same time, they also need to figure out if they would be able to accept a particular order or not. Let's say एक साथ बहुत सारे orders आ गए हैं किसी एक particular item के, and they are super busy. So they would need to reflect this in their side कि okay, it's a busy time right now, the delivery will take maybe 1 घंटा या maybe 1.5 घंटा। तो ये जो सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल वेदर कैसा है, आसपास डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स लेट इन द नाइट एंड मे बी देयर एंटायर मेन्यू इज नॉट अवेलेबल, केवल उसमें से कुछ आइटम्स ही फिलहाल अवेलेबल हैं, बाकी आइटम्स दे आर ओवर, वो खत्म हो गए, उनके पास में है ही नहीं बर्गर, तो आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट काइंड ऑफ ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इनफैक्ट जब दिन खत्म होता है तो दे आर इजिली एबल टू
ट्रैक कि उस दिन भर में उनकी कितनी सेल्स किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हुई हैं, ताकि दे कैन क्लियरली डू ऑल दैट ट्रांजैक्शंस। एंड स्पीकिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक 100 रुपए के ऑर्डर की, तो दैट रेस्टोरेंट gets in between of 60 to 80 rupees depending on how much is the split and the complete commission basis। अब आप अगर खुद बाहर जाके खाना खा लें या अपना ऑर्डर खुद पिक करके लेके आ जाएं तो डेफिनेटली आपका पैसा बचेगा। तो यू कैन जस्ट से कि इट इज अ कन्वीनियंस फी फॉर योर लेजीनेस, कि अब अगर आपको घर बैठे ही खाना चाहिए सो या आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, बट दिस इज हाउ द कंप्लीट ऑर्डर मैनेजमेंट सिचुएशन इज ऑन द बैक एंड। एंड आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली देयर आर मेनी रेस्टोरेंट्स जहां पे दे जस्ट ऑपरेट लाइक अ क्लाउड किचन। आई मीन दे जस्ट हैव अ किचन विद 4 डिफरेंट नेम्स। आपको अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक जोमेटो एंड स्विगी, अलग अलग रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे जो फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आई मीन यू कांट गो आउट एंड डू इन रेस्टोरेंट डाइनिंग, आपको केवल डिलीवरी का ऑप्शन ही मिल रहा है। एंड दे आर सुपर एफिशिएंट एट मैनेजिंग ऑल दीज ऑर्डर्स एंड दे आर हैप्पीली रनिंग अ क्लाउड किचन। तो ये जो मॉडल है ये बहुत तेजी से पॉपुलर अभी हो रहा है इंडिया में, और इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप जोमेटो पे देखेंगे इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड या एवरीथिंग हैपन्स वेरी सीमलेसली एंड वेरी प्रिसाइजली एज वेल। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड साइड ऑफ इट विच इज द डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क। अब ये जो हमारे डिलीवरी वाले सारे लोग हैं, दे नीड टू साइन अप फॉर अनदर type of application। Basically the things on the screen that you see is all different। जो आपको दिखता है वो अलग है जो रेस्टोरेंट को दिखता है उससे। At the same time what they see is a different kind of a system, but just to enroll themselves once they sign up उनको अपनी कुछ details डालनी पड़ती है। Details like vehicle details, if in case they are using a bicycle for delivery compared to a motorcycle, आपको पता है the delivery times would be different। अब जो जॉब दिया जाएगा, the jobs that would be assigned for delivery, it would be ideal कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो दे डोंट असाइन अ गाय विद अ बाइसिकल। अब ये सब करने के बाद दे गेट टू चूज द लोकेशन वेयर दे वांट टू सर्विस। दे कैन डिसाइड एन एरिया कि उनको इस एरिया के अंदर अपनी डिलीवरीज करनी है, एंड देन बेसिस ऑफ ऑल डिफरेंट परम्यूटेशंस, वेदर कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, नियर बाय हु इज द राइडर अवेलेबल, एवरीथिंग पुट टुगेदर, दे आर असाइन्ड द ड्यूटी। And the duty is pretty simple because you have ordered the food, the restaurant is preparing the food, and their job is to deliver that food from the restaurant to your place। अब ये करने के लिए of course they need maps, and maps को use करने के लिए they would want to have GPS enabled devices, और उनका GPS हमेशा on रहता है so that even you as a user get to see that what is the current position, where is your restaurant, where is your rider right now, वो रास्ते में कहाँ पहुंचा है, how much more time it's going to take। मतलब आप ताकि हर 5-5 मिनट में उनको फोन करके परेशान ना कर दें, you can also see that what's the progress, how is this entire system going on। Now guys, the system is really complex, लेकिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ about the fourth thing now, which is that platform। जोमेटो और स्विगी कैसे बैक एंड पे ऑपरेट करते हैं। सो एवरीथिंग कमिंग टू यू, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वैसे ब्रेक इतना छोटा है कि इस छोटे से ब्रेक में नो मैटर विच ऐप यू यूज, नो मैटर व्हाट यू ऑर्डर, कोई भी आप तक कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगा। मैं ही आ जाऊंगा ब्रेक के बाद टू टेल यू मोर अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। Hello guys, welcome back after the break to your favorite show which is Tech with TG, जहाँ पे I talk about all the tech, making it very simple and delicious. Delicious of course because अभी हम बात कर रहे हैं all about the food delivery apps. Zomato, Swiggy, any app you talk about, कैसे ये apps आप तक खाना पहुंचा देती हैं गर्मा गर्म within time, how is the tech behind that? And अभी तक हमने जाना about our side of things, about how we order, the restaurant side of things, how they manage, and the delivery partner side of things, that how they deliver. But now it's time to go deep and understand कि आखिर ये application का जो पूरा backend है ये कैसे काम करता है, because it's a very complex algorithm that's running.
नीड टू सी कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, अबाउट द थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स आर अवेलेबल, किसकी रेटिंग्स कितनी है, किसको कौन सा ऑर्डर मिलेगा, हाउ द ऑर्डर्स आर बीइंग मैच्ड, हाउ इज द इन्वेंट्री गोइंग ऑन, बेसिकली एवरीथिंग, व्हाट्स योर लोकेशन, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट रेस्टोरेंट यू चूजिंग, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स एल्गो चलता है for you to have just one गुलाब जामुन। गुलाब जामुन क्यों? क्योंकि मेरा खाने का मन कर रहा है। I'm talking about it। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी की, तो मैं शायद खत्म होते ही ऑर्डर कर लूंगा। But let's know more in detail how this complete complex system works. Now today, in the world of food delivery, we face unique challenges, right? It's a complex tripartite ecosystem which works on hyper demand on a localized level. Today, our app takes care of everything, like showing the relevant restaurant partners that are available to you, also showing the estimated delivery times that it will take for us to deliver your order across thousands and thousands of choices, and also how do we make some of these choices very affordable to you, right? Now it makes quick decisions by doing thousands of calculations in the background. Now these calculations considers a user's food preferences. It considers the availability of delivery riders that are there in the system. It also considers what is the status at our restaurant partners, how much time do they take to prepare the food, etc., etc. We also use hyperlocal data to make customer experience better and also improve our food marketplace so that we are making smarter decisions on the customer's behalf. Now, today there are thousands of options, right? And it's very difficult to decide what to order, what to eat. It's a daunting task. So customers sometimes get completely lost, right? Now, how this neural search today helps is that it helps you decide using conversational, open-ended queries, right? And you receive recommendations tailored to those queries. To give you an example, right? I've just finished my workout. मुझे कुछ healthy खाना, right? Or show me some vegan-friendly options, right? Basis some of these queries that you type, you will actually get personalized recommendation. When a customer orders, right? When I will enter the application, I want to order for myself. One is I will get the relevance. I'll choose a particular restaurant. I'll choose the food items. I'll place the order. Now, once a customer actually places an order, it actually initiates a number of steps in the backend, right? Firstly, that order is instantly assigned to a restaurant partner, right? The restaurant partner will get that signal, and basis that signal, the restaurant partner will start preparation in the kitchen that he has, right? Now, every restaurant partner has a predicted prep time. Basis their overall volumes that they've been doing over a period of time, we know that there is a certain time that this restaurant partner will take to prepare an order of a certain size. Now, basis those predicted prep times, we will then assign delivery riders which are actually available in the vicinity, right? Which we actually call the first mile of the entire process, which is basically when a order is assigned to a delivery rider, he's actually getting to the restaurant partner, and that's the first mile. Now, here also there are multiple permutations that go in, but the end objective is that how do you increase the assigned efficiency of the riders that are available so that you can also cater to more customer demand. So the delivery executive will get that assignment basis his location around the restaurant partner and his availability, right? Then the delivery executive will actually go to the restaurant partner and actually tell them that this is the order that I've come to pick up. Now, within this also, there are a bunch of handshakes that happen, right? Today, if the restaurant partner has prepared food, they will add a mark food ready signal on the app, which will get relayed to the delivery partner. And instantly, when the delivery partner goes, the food will be ready. He'll pick up the food and then he will start moving to the customer, right? In certain cases, what happens is when the restaurant is taking more time to prepare and the delivery rider is assigned, then there is some wait time that is spent by the delivery rider at the restaurant partner waiting for the order, right? Now that's the leg. Once that is completed, the delivery partner then goes on the journey of the last mile. And last mile is typically restaurant to actual consumer location, right? And now that will vary basis where the customer has ordered from. And it can vary between anywhere from 0 kilometers going up to the city last mile that we operate. Ratings is also a very important piece of the entire ecosystem, right? One, for a restaurant partner, it is very important that they are keeping the consumers extremely happy so that the consumers बार बार आके उन्हीं के restaurants order करें. So they want to give them the best
quality, they want to give them good food, right? And that's the end objective of a restaurant partner. For us, the end objective is that when we deliver the order, customer is again delighted, right? We've delivered within reliable promise time. The order is in the perfect shape in which the restaurant partner has handed over the order to us. We know that the Indian consumer is value conscious, right? And therefore, we have multiple level of discounts for every kind of consumer, right? किसी कंज्यूमर को फ्री भी अच्छा लगता है कि एक फ्री गुलाब जामुन आएगा तो आई एम रियली हैप्पी. सम कस्टमर विल लाइक के मुझे 50% ऑफ मिल गया. दैट्स अ ग्रेट वैल्यू डील ऑन अ बल्क ऑर्डर, राइट? सो वी बेसिस कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट, we have different discounts that are always there in the app, and that's what our team currently does and partners with the restaurant partners in offering the best deals. And the good part is that basis your preferences, you will also see relevant discounts that show up in the app and you can use. And I think that's a great value that customers also see over a period of time. And you will always get something good on offer, right? आपको ये कभी नहीं होगा कि ऑफर नहीं अच्छा मिला. I think that is something that we'll always guarantee. So there you have it, guys. I mean, I'm sure आप सभी को अच्छे से आइडिया लग चुका है that how this entire complete complex tech of food delivering apps is enabled. क्या क्या वो factors हैं, किस किस तरीके से मिल के पूरा complex set of networks आपस में काम करता है, and at the end आप तक नहीं, I'm not gonna say गुलाब जामुन, आप तक आपका खाना पहुंच पाता है. Yes, it is a very complex process because it also involves a transaction. You would never want कि आपने एक बार ऑर्डर लिया उसके बाद में पेमेंट जो है उसको लेके इश्यूज आ रहे हैं. Maybe there are some other complaints about the quality or like multiple things. So definitely it might sound easy, but in reality, in action, it is definitely a complex set of things put together. तो रात को अगर आपका वर्ल्ड कप देखते हुए कुछ खाने का मन करे या किसी रैंडम टाइम पे गेस्ट आने वाले हो और आपको तुरंत कुछ ऑर्डर करना पड़ जाए, you might pick up your phone, you might tap into your favorite app and you might order. But I'm sure उस टाइम पे आपके दिमाग में ये एपिसोड चल रहा होगा because you would be aware by then कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है. Guys, keep on watching Tech with TG. If you have any suggestions, any questions, whatever, you know the address. It's tg@ndtv.com. मैं और पूरी टीम आप सभी के सारे emails पढ़ने वाले हैं and मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए next week another complex tech, completely simplified, just for you so that you all can enjoy this fascinating world of tech. That's it for this week. See you next time. Have a good day.